తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం లేకున్నా రాజకీయాలకు అతీతంగా తెలంగాణకు రికార్డు స్థాయి రైల్వే అభివృద్ధి నిధులు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ చొరవతో రైల్వేలను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. Indian Railways plays a significant role in our country's economic, social and cultural integration. So, Railways is the biggest employer with 12,30,000 employees. And when it comes to budget, this year 2,52,000 crores, out of which 42% of the budget goes to salaries and 22% to the pensions. In spite of that, 64% the budget goes to salaries and pensions. Railways has done a great job in the last 10 years, sir. And when compared to our state, Telangana, hats off to our railway minister, Ashwini ji, for record allotment of the budget to Telangana. Prior to that, we used to get on an average 886 crores annually during UP and Congress regime. But now, Andhra Pradesh alone got 9,147 crores and Telangana 5,337 crores. You can imagine how much jump it has given to. In spite of BJP has not government there in Telangana. Since 2014, 753 kilometers of new tracks have been laid in Telangana, close to rail network of United Arab Emirates. And electrification, 100% electrification took place in Telangana. 1,096 kilometers have been laid. Now 22 ongoing projects are there in now Telangana, worth 40,000 crores and 40 Amrit stations with a 2,000 crore budget. They are being developed. Totally 22 projects are being now under consideration. 5 Vande Bharat trains have been given to Telangana. Andhra Pradesh and Telangana put together, we have 13 Vande Bharat Express. Thanks to our railway minister, now recently for Andhra Pradesh, as per the Andhra Pradesh Reorganization Act, he has given a special South Coast Railway Zone. And as far as this, सिंस इंडिपेंडेंस सर 75 साल की आजादी के बाद पहली बार हमारा सिकंदराबाद जो ब्रिटिश जमाने के समय में बने से आज रेलवे स्टेशन को लगभग 715 करोड़ से आज पूरा न्यू कंस्ट्रक्शन लिया गया और हैदराबाद रेलवे स्टेशन भी 327 करोड़ ऑलमोस्ट 1042 करोड़. इसके साथ 40 रेलवे स्टेशन वर्थ 2000 करोड़ आर नाउ बीइंग लेड इन तेलंगाना अलोन. सर फॉर इंफॉर्मेशन सर, कांग्रेस ने हमारे विपक्ष ने बहुत सारे बात किए थे. आपको बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी ने जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मेदक से हमारे मेदक के लोग इंदिरा गांधी जी को एक संसद के नाते चुनकर पार्लियामेंट में बिजाने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उनका एक भी रेलवे स्टेशन नहीं बनाया गया. मगर मोदी जी आने के बाद पहली बार मेदक, सिद्दीपेट और कोमरेवली तीनों रेलवे स्टेशन बनाए 75 साल के आजादी के बाद. आजादी के बाद पहली बार हम इतना बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को कोई भेदभाव नहीं, हम तेलंगाना की आबादी के लिए किस तरह हम आज सरकार बनाया जा रहा है. आज हमारे तेलंगाना के अंदर इतना आज तरक्की रेलवे के अंदर किया जा रहा है. आज मुझे बताने के लिए मैं गर्वान्वित हूं कि रेलवे के अलावा भी अन्य प्रोजेक्ट्स में भी